of class 12th. Welcome to a commercial maths class. Here we have some question related to the sum of nth term of the series. Okay, find the sum of nth term of the series. A is equal to 2a plus 3a minus b plus 4a minus 2b plus and so on. This is nth term of series because the last term is not given. Let the first term of an AP x is equals to 2 and common difference be y is equals to second term minus first term, like 3a minus b minus 2a is equals to a minus b. Then the common difference will be a minus b. Now we are going to putting these value on the formula of nth term of series. S is equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 d bracket close, where x is equals to 2a, where x is equals to a and d is equals to y. Putting the value n upon 2, a is equals to x and x is equals to 2a plus n minus 1 into d is equals to a minus b. Now n by 2, 2 to the 4, 4a n minus 1 a minus b. Now we are going to open all the brackets and multiplying each other with each other terms. n by 2 3a, ये a आपस में कैंसिल हो गया, प्लस एन ए माइनस एन बी प्लस बी. Okay, then n by 2 3a plus na minus nb plus a. This is this is plus b. Okay, because minus b into minus 1 is equals to plus b. Okay, then n by 2 3a plus na minus nb plus b is the sum of the nth term. Okay. Now the second question is, if pth term of AP is 1 upon q and qth term of AP is 1 upon p, then prove that the sum of the PQ is 1 by 2 PQ plus 1. Okay. Now the pth term of an AP is 1 upon q. Pth term is equals to a plus p minus 1d is equals to 1 upon q, where a is common difference and d is a is first term and b is common difference. This is your equation 1. Then q term is equals to 1 upon p, जो कि आपका यहाँ पे दिया है. तो q टर्म हमारा होगा क्या, a प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन p. दिस इज इक्वेशन 2. अब हमें क्या करना है, pth और qth टर्म निकालने हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ a प्लस p माइनस 1d माइनस a प्लस q माइनस 1d, देन 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p. Open all the brackets, a plus p minus 1d minus a minus q minus 1d is equals to LCM ले लिए pq, this is p minus q. Then यहाँ से देखिए हमारा d इस टर्म में भी d इस टर्म में भी है, तो d हमारा कॉमन हो गया. बचा क्या, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इज इक्वल्स टू p अपॉन q अपॉन p. d p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 bracket close equals to p minus q upon pq. d minus q is equals to p minus q upon pq. यहाँ से हमें d मिल जाएगा 1 upon pq. Putting the value of d in equation 1, d को हम equation 1 में put कर देंगे. After the solving the we get a is equals to 1 upon pq. a and d both are 1 upon pq. Now according to the question, sum of PQ term is 1 upon 2 PQ plus 1. ये हमें प्रूव करनी है. तो जो
हमें ए और डी की जो वैल्यू मिली है उसको हम सम ऑफ द एन टर्म में रख देंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला है, लिख लो आप, n/2 2a प्लस n-1 d। सम ऑफ पी क्यू टर्म इज इक्वल टू एन की जगह पे पी क्यू, ए की जगह पे 1/p और डी की जगह पे 1/p हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ पी क्यू अपॉन 2